हेलो एवरीवन। लेसन नंबर 21 प्राणियों गोकुल। ये एक आत्मकथा अंश है, यानी कि इसका साहित्य प्रकार कौन सा है तो आत्मकथा अंश। राइटर है प्रकाश आमटे। प्रकाश आमटे का जन्म 29 दिसंबर 1948 को हुआ था। अब उनका पूरा नाम है प्रकाश बाबा आमटे। મહારાષ્ટ્રનું આનંદવન એમનું વતન છે। પોતે વ્યવસાય ડૉક્ટર છે। લોક બિરાદરી પ્રકલ્પ નામની સંસ્થા દ્વારા લોક સેવાના કાર્યો પણ કરે છે। પ્રકાશ વાડ પેથવે ઓફ લાઇટ તેમની આત્મકથા છે। રાનમિત્ર પ્રાણીઓ સાથેના અનુભવોનું પુસ્તક છે। તેમના કાર્યો પરથી ફિલ્મ પણ તૈયાર કરેલી છે। તેઓ પદ્મશ્રી અને मैग्सेस एवॉर्डથી सम्मानित થયેલા છે। ओके, तो हमने जान लिया कि इस छोटे से इंट्रोडक्शन से कि प्रकाश आमटे हैं राइटर जो है हमारे, वो बहुत ही एनिमल्स यानी कि एनिमल्स लवर यानी कि प्राणी प्रिय व्यक्ति है। લેખકનો ઊંડો પ્રાણી પ્રેમ આ કૃતિમાં વ્યક્ત થયો છે। મૂળ મરાઠીમાં લખાયેલી અનુભવ કથાના પ્રકાશની પગદંડી એવા ગુજરાતી अनुवादમાંથી આ અંશને લેવામાં આવ્યો છે। तो यहाँ पर एक छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है कि लेसन प्राणियों गोकुल कौन से अनुवादिक अंश में से लिया गया है, तो आंसर इज प्रकाशनी पगदंडी। હેમલત્સા પ્રકલ્પના અનુસંધાનને વિવિધ અનાથ અને બીમાર પ્રાણીઓની સારવાર કરતા તેમાંથી ઊભું થયેલું પ્રાણીઓનું સુંદર ગોકુળ આકર્ષક રીતે વર્ણવાયું છે। લેખકની સરળ ભાષામાં બબલી, કાળું, હરણનું બચ્ચું, ખિસકોલી, ચિત્તો, રીંછ, નીલગાય, શિયાળ, જરખ, મોર, સાપ વગેરેના પ્રેમભર્યા સંબંધમાં ચિત્રો રોચક રીતે રજૂ થયા છે। લેખકનો પ્રાણી પ્રેમ વનવાસી બાળકોને પ્રાણી પ્રેમી બનાવે છે। વાચકમાં પણ પ્રાણી પ્રેમ જગાડે છે। લેખક પ્રાણીઓની સંભાળ અંગે જાણકાર નહોતા, પરંતુ પ્રેમને કારણે બધું શીખી ગયા। એ ખૂબી સરસ રીતે વ્યક્ત થઈ છે। માનવ અને પશુ પંખીનું સહઅસ્તિત્વ કેવું નિકટ, પ્રેમભર્યું અને સહજ બની શકે છે તે પ્રાણીઓના ગોકુળમાં પ્રત્યક્ષ થાય છે। આખું વર્ણન સહજ એટલું જ આકર્ષક પણ છે। तो हमारे लेसन के रेफरेंस में जो हेमलत्सा प्रकल्प के अनुसंधान में यानी कि हेमलत्सा प्रकल्प में विविध यानी कि अलग अलग प्रकार के अनाथ और बीमार एनिमल्स को लाया जाता था, उनकी देखभाल की जाती थी, उनकी सारवार भी की जाती थी, सबकी केयर करके कैसे अच्छे से रखा जाता था। और अंत में ये पूरे प्रकल्प को जैसे कृष्ण भगवान का गोकुल है उसी तरह एकदम तद्दन सुंदर और आकर्षक तरीके से आलेखा गया है। इन शॉर्ट की इंट्रोडक्शन में जितने भी एनिमल्स के नाम दिए गए हैं वो सारे एनिमल्स के बारे में हमें इस लेसन में जानने को मिलेगा। शायद ऐसा भी हो हम इस एनिमल्स को जानते हैं लेकिन उनके बारे में ऐसा डीपली नॉलेज नहीं था, वो लेसन में जानने को मिलेगा। ओके, तो चलो लेसन की शुरुआत करते हैं। આ બધા કામની શરૂઆત થઈ તે હેમલત્સા પ્રકલ્પ શરૂ થયા પછી બનેલા એક પ્રસંગના કારણે। હેમલત્સાનો પ્રકલ્પ શરૂ થયે 5-6 મહિના થયા હશે। વાંદરાના બચ્ચાને લઈને સ્થાનિક લોકો જતા હતા। એને બદલે અનાજ આપીશું એમ કહ્યું એટલે એ લોકોએ બચ્ચું અમને આપી દીધું। બચ્ચાને અમે અમારા ઘરે લઈને તો આવ્યા, પણ એને ઉછેરવાનું શી રીતે એની અમને ક્યાં ખબર હતી। શરૂઆતમાં મિલ્ક પાવડરનું દૂધ ડ્રોપરવાળી શીશીથી એને પીવડાયું। એ વખતે એણે દૂધ પીધું, પછી એને ન અમને फाव्યું कि न हमने। तो ये एनिमल्स का पूरे उछेरने का काम, कैसे उनकी केयर करने का काम, ये सब कैसे शुरू हुआ, तो ये एक बनाव है, एक घटना हुई है, उसके रेफरेंस में ये पूरी जानकारी आपको दी गई है। एक्चुअली बहुत पहले की बात है कि जब ये हेमलत्सा प्रकल्प है कि जो एनिमल्स के लिए बनाया गया था वो बस शुरू ही हुआ था, 5-6 महीने ही हुआ था। वहाँ की बात है कि गांव के कुछ स्थानिक लोग हैं वो बंदर के छोटे से बच्चे को लेकर जा रहे थे
और हमारे राइटर है और उनके साथी है, उन लोगों ने ऐसा बोला कि आप हमें ये बच्चा दे दो, उनके बदले में हम आपको अनाज देंगे। तो ऐसा करके राइटर और उनके साथियों ने गांव वालों से यह बंदर का बच्चा ले लिया। लेकिन लाई तो सही, लेकिन उसकी केयर कैसे करना है वो सब कुछ उनको कुछ भी मालूम था नहीं। और शुरुआत में दूध पिलाया, वो भी कैसे, छोटे बच्चे को जैसे ड्रॉपर से या फिर किसी छोटी सी बॉटल से पिलाते हैं, वैसे वैसे डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से दूध पिलाया। लेकिन ना ही कंफर्टेबल रहा उस बंदर को और ना ही इन साथियों को। बस ऐसा ही करते करते धीरे धीरे दोनों को ठीक से आ गया। और एक बात है કે એ અમારી ઝૂંપડીમાં સતત અમારી સાથે જ રહેતું। એ બચ્ચું માદા હતું એટલે એનું નામ બબલી રાખ્યું। બબલી અમારા प्राणी अनाथालयની पहली सभ्य। तो यहाँ पर देखिए कि आपको जो हेमलसा प्रकल्प नाम का जो प्राणियों का अनाथालय है उसकी जो भी स्टोरी आपको बताई जा रही है वह बिल्कुल शुरुआत से बताई जा रही है कि उनकी पहली जो सभ्य थी वो एक छोटा सा बंदर था और वो भी फीमेल है, इसलिए उनका नाम रखा था बबली। ओके, तो यहाँ पर बंदर की बात फिनिश होती है। अगले पैराग्राफ में वहाँ पर एक कुत्ते की बात हो रही है કે એ વખતે અમારે ત્યાં કાળુ નામનો એક દેશી કૂતરો હતો। એ સતત મારી સાથે રહેતો। બબલી બહુ નાની હતી। ક્યારેક ક્યારેક તે મારા ખભા પર બેસતી। બબલી यानी कि किसकी बात हो रही है, तो वो बंदर, फीमेल बंदर लाए थे उसकी। ક્યારેક અમારા શાંતાબાઈના પગની પીંડીએ વળગીને એમની સાથે આખા ઘરમાં ફર્યા કરતી। હું એને ક્યારેક કૂતરાની પીઠ પર બેસાડતો અને એને ત્યાં રહેવા દેજે એમ કહેતો। પહેલાં એને એ વાત વિચિત્ર લાગતી, પણ પછી એટલી બધી આદત પડી ગઈ કે બબલી એને પોતાની જવાબદારી લાગતી। અમે ફરવા જઈએ ત્યારે સાથે આ કાળુ રહેતો અને બબલી એની પીઠ પર बैठेली હોય જ। तो यहाँ पर राइटर और उनके साथियों ने क्या किया, जो कुत्ता था कालू और बबली दोनों की फ्रेंडशिप करवा दी। ये सब कहीं पर भी बाहर घूमने के लिए जाते तो बबली और कालू दोनों साथ में ही जाते। कालू के ऊपर, उसकी पीठ पर बबली बैठ जाते थे। जैसे कि हमें कोई इमेजिनेशन करना है तो कुत्ते के ऊपर वो छोटी सी बबली यानी कि बंदर बैठ जाता था। વાંદરું એ પ્રાણી જ એવું છે કે ઠરીને બેસે નહીં। બબલી વચ્ચે કોઈ ફળ ખાતી, એને ઝાડ પર ચડી જવાનો તુક્કો આવતો એટલે એ કાળુની પીઠ પરથી કૂદીને જતી રહેતી, પણ કાળુને એ બાબતે કોઈ વાંધો ન હતો। ઉલટું એ પાછી આવીને એની પીઠ પર બેસે ત્યાં સુધી તે રોકાઈ રહેતો। ओके, तो यहाँ पर आप सब अच्छी तरीके से जानते होंगे कि सारे जो एनिमल्स हैं उसमें से सिर्फ बंदर ही ऐसा है जो एक जगह पे टिके यानी कि शांत तरीके से बैठा नहीं रहता। वो यहाँ से वहाँ उछल-कूद करता रहता है। जैसे कि हमारे लेसन में है बबली। तो कभी कभी रास्ते में चलते चलते उसको किसी पेड़ पे कुछ फ्रूट या फल दिख गए और उसको लेने हैं तो यहाँ से वहाँ उछल कूद करती रहती थी और वापस कालू की पीठ पर आकर बैठ जाती थी। लेकिन उस बात से कालू को यानी उस कुत्ते को कोई कुछ भी एतराज़ होता नहीं था और उल्टे से वो तो बबली की वेट करता था। तो आपको यहाँ पर ये सारी बातें इसलिए बताई जा रही है कि आपको भी ठीक से समझ आए कि हेमलसा प्रकल्प में प्राणियों का जो ये अनाथालय है उसके अंदर प्राणियों यानी कि सारे एनिमल्स के अंदर रिलेशन कैसे थे, वो किस तरह से अच्छे दोस्त बने थे। इसलिए यहाँ पर आपके साथ ये छोटी छोटी बातें भी शेयर की है। एक बार कोઈએ અમને હરણનું સાવ નાનકડું બચ્ચું લાવી આપું। તો यहाँ पर बात हो रही है હરણ यानी कि हिरण की। શરૂઆતમાં એ બહુ જ બાવરું બની ગયું। માના સ્પર્શથી એને જેવી સલામતી લાગે એવું કંઈ અહીં લાગે नहीं। ये स्वाभाविक હતું। यानी कि एक दिन ऐसा हुआ कि किसी ने इन सबको एक हिरन का छोटा सा बच्चा लाके दे दिया। शुरू शुरू में वो बच्चा इतना डर गया था, उसको जैसे ही उसका बॉर्न होने के बाद जैसे ही उसको उसकी माँ का स्पर्श से जैसे सेफ्टी फील होती है वो सेफ्टी यहाँ पर होती नहीं थी। वो बात भी बिल्कुल सही है और बिल्कुल स्वाभाविक भी। પણ અમે થોડું વિચાર્યું કે જન્મ વખતે તો બચ્ચાની આંખો બંધ હોય છે
પછીના 4-8 દિવસ એ બંધ જ રહે છે. પછી તે માનસીય રીતે ઓળખે છે. એમ હોય છે કે મા એમની પાસે આવે એટલે એમના શરીરનો પાછળનો ભાગ ચાટતી હોય છે. એ સ્પર્શ ધ્યાનમાં આવે એટલે આ બચ્ચા એમની સામાન્ય ક્રિયાઓ કરે છે, દૂધ વગેરે પીએ છે. અમારા ધ્યાનમાં આવ્યા પછી અમે પણ એવું જ કરવા લાગ્યા. પાછળનો ભાગ ખંજવાળીએ એટલે એ બચ્ચું અમારા હાથ પર બધી ક્રિયા બતાવતું. અમારી આ યુક્તિનો ઉપયોગ આ પ્રાણીઓ અમારે ત્યાં ગોઠવાય તેમાં થયો. 2-3 દિવસમાં વાસ અને સ્પર્શનો પરિચય થાય એટલે बच्चा सामने चालीने जाते दूध पी लेता। तो यहाँ पर एक बेसिकली बात की है कि न्यूबॉर्न बेबी के लिए जो माँ के हाथ का जो स्पर्श है उसकी तो बात ही अलग है। लेकिन हेमलसा प्रकल्प में सिर्फ ऐसे प्राणी आते थे जो बिल्कुल अनाथ है। तो यहाँ पर भी हेमलसा प्रकल्प में माँ के स्पर्श जैसा एक कुछ जुगाड़ करना पड़ा, जैसे कि उन प्राणियों की सुबह की जो सामान्य क्रिया है वो सब हो जाए, ठीक से खाना पीना पी ले। बस इसी तरीक़ों से जो छोटे छोटे बच्चे भी आते थे प्राणियों के, वो भी सामने से आके दूध पीने लग गए। ओके, तो यहाँ तक जाना हमने। आगे देवखार नाम की खिसकोली के बारे में है, रींछ के बारे में है, मगर है, टाइगर है और सांप के बारे में काफ़ी सारी गैर मान्यता हम सबके मगज में होती है। वो सारी गैर मान्यता शायद हम इसी लेसन से निकाल पाएंगे। ओके, देन न्यू पेराग्राफ, पेज नंबर 108। मुन्ना नामनो बीजो एक टपकावड़ो चीतो अमारे त्यां हतो। ए आरती साथे शाळाए पण जतो। ए वर्गमां बेसती अने आ त्यां ज बहार बेसी रहेतो। तो मुन्ना नामनो जे चीतो हतो ए कोनी साथे अने क्यां जतो हतो? तो आरती साथे जतो अने शाळाए साथे जतो। आरती साथे शाळाए जतो, आरती वर्गमां बेसे तो ते बहार बेसी रहेतो। एनी निशाळ छूटे એટલે એની સાથે ઘરે પાછો આવતો। કોઈ પણ છોકરાને એણે ક્યારેય તકલીફ આપી નહીં। આરતી 3જા ધોરણમાં ગઈ ત્યાં સુધી આમ ચાલ્યું। આગળ ઉપર તે મોટો થયો। નાના બાળકો તેને જોઈને ડઘાઈ જવા લાગ્યા। दैट मीन्स के छोटे बच्चे जो स्कूल में थे उसके नीचे के क्लास के वो भी चीते को देख के डर जाने लगे। એટલે મુન્નાને શાળાએ મોકલવાનું બંધ કર્યું। શરૂઆતમાં લ્યુસી અને બેન એ 2 ટપકાવાળા ચિત્તા બાદ કરતાં અમારે ત્યાં આવેલા બધા ચિત્તા ઉત્તમ જીવ્યા। રાજા અને નેગલીના 7-8 બચ્ચા અમે બહાર આપ્યા, પણ એમાંના કોઈ જ જીવ્યા નહીં। બહાર આપ્યા यानी कि किसी और प्रकल्प में या फिर किसी और अभयारण्य में। 4-8 વર્ષમાં મરી ગયા। અમારે ત્યાં પ્રાણીઓ रोगमुक्त અને तंदुरुस्त रहे छे ये साबित करनारी आ बाबत है। ये कैसे प्रूव हुआ कि जो बच्चे उन्होंने चीते के बच्चे जो बाहर दिए थे वो मर गए 4-8 सालों में और जो उनके पास थे वो सही से जी रहे थे। आ बच्चा तो गया पण एमनो बाप अमारा प्रकल्प पर घणा वर्ष जीव्यो। चित्तानी जिंदगी सामान्य रीते 15 वर्षनी होय छे, पण राजा जो 24 वर्ष जीव्या। आ चित्ताए अमने बहु माया लगाड़ी એટલે પ્રકલ્પ પર ટપકાવાળા 2-3 ચિત્તા રાખવાનો શિરસ્તો ચાલू રહ્યો અને બધાને એવી આદત જ પડી ગઈ। यानी कि राजा नाम का जो चित्ता था वो कितने साल जिया? जो कि 24 साल जिया, लेकिन एक्चुअली एवरेज उनकी लाइफ होती है 14 या 15 साल की। देन नेक्स्ट पैराग्राफ है सांपों के बारे में। तो स्नेक होता है। सांपों को लेकर हमारे मन में काफ़ी सारी गैर मान्यता होती है, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। जो एक्चुअली जो थॉट्स सही है उनसे भी कई ज़्यादा हमारे दिल में सांप को देखते ही काफ़ी सारी घबराहट हो जाती है। तो उसके रिलेटेड ये पैराग्राफ है। આપણે ત્યાં સાપ વિશે ઘણી ગેરમાન્યતાઓ છે। સાપ દેખાય એટલે માણસો પહેલાં એને મારે છે અને પછી તેને ઓળખવાની કોશિશ કરે છે। ओके, तो ये लाइन बिल्कुल करेक्ट है कि जैसे ही हम सांप को देखते हैं तो घबराहट में इतने डर जाते हैं कि सबसे पहले तो उसको मार ही देते हैं। हम मारे या फिर हम किसी और की हेल्प ले ले। उसका मारने के बाद ही हम चेक करते हैं कि ये कौन सा सांप था, जहरीला था कि नहीं था। बस यही सब करने में आखिर में सबसे पहले तो सांप की जान चली जाती है। બધા સાપ ઝેરી હોતા નથી। નાગ, મણિયાર, ગોસણ, ફુરસ, ચટાપટ્ટાવાળો અથવા આજ્ઞા મણિયાર એ ખરેખર ઝેરી સાપ છે। કોબ્રા એટલે નાગ અને ફેણ ચઢાવનારો એકમાત્ર સાપ
ધામણ ઝેરી હોતા નથી, પણ એ ઝેરી હોય છે એ આપણી ગેરમાન્યતા છે. તેની પર પગ પડવાથી એ કોઈને કરડી હોય, એ વ્યક્તિને એલર્જીક કારણોસર ઝીણી ફોલ્લીઓ થઈ હોય અને એ વાત બધે જ ફેલાઈ જાય એવું હોય, એવું બની શકે. પણ ધામણ પૂંછડેથી કરડે એવી એક ગેરમાન્યતા છે. સાપ ખુન્નસ રાખે છે ને વેર વાળે છે, એ બહુ મોટી ગેરસમજ ફેલાયેલી છે. ખુન્નસ રાખવા જેટલી તેનામાં યાદશક્તિ જ હોતી નથી. એ ક્યારેક તમારો પીછો કરતો નથી. કોઈ પણ સાપ આપમેળે હુમલો કરતો નથી. એને તકલીફ પડે તો જ એ સ્વરક્ષણ માટે કરડે છે. આપણને કરડેલું સાપ ઝેરી છે એ ક્યારેય તમારો પીછો કરતો નથી. કોઈ પણ સાપ આપમેળે હુમલો કરતો નથી અને એને તકલીફ પડે તો જ એ સ્વરક્ષણ માટે કરડે છે. તદ્દન બિલકુલ સાચી વાત છે. આપણને કરડેલો સાપ ઝેરી છે કે બિનઝેરી એ જાણી લેતા પહેલાં જ માણસ અધમો થઈ ગયેલો હોય છે. एक्चुअली ये इसलिए कि सांप कौन सा है, कैसा है, ये सारी जानकारी हमें नहीं होती. इसलिए डर के मारे सबसे पहले तो सांप को हमारे हाथ में जो भी हथियार हो, जैसे कि लाठी, तो लाठी भी हम उसको मार देते हैं. हमारे मन में काफ़ी सारी गैर समझ है, गैर मान्यता है सांपों के बारे में कि वो तो पुराने जन्म का वैर लेता है, यानी कि हमसे अगर कोई बदला लेता है, हमारा पीछा करता है. तो एक्चुअली लेसन में दी गई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सांप कभी हमारा पीछा नहीं करता. वो कभी पहले से हमला नहीं करता. अगर उसको किसी भी प्रकार की तकलीफ़ हुई आपसे, या फिर उसके आसपास वालों ने, किसी इंसान ने, किसी प्राणी ने उसको छेड़छाड़ की, तभी वो अपने स्वरक्षण के लिए હુમલા કરતા है. દરેક સાપને ઓળખતા આવડવું જોઈએ. આવું લાગવાનું બીજું એક કારણ એ છે કે હું નાનપણથી મોટી સંખ્યામાં સાપ મરાતા જોતો આવ્યો છું. ये बात कौन कर रहा है तो हमारे राइटर. આનંદવન ઊભું કરતી વખતે પણ ગેરમાન્યતાઓને કારણે સાપ દેખાયો નથી કે માર્યો નથી એવી રીત અપનાવવામાં આવી હતી. એટલે કે હેમલક્ષા આવ્યા પછી શરૂઆતમાં જ મેં સાપ પકડવાની અને એ ઝેરી છે કે બિનઝેરી એ પારખવાની પદ્ધતિ सीखी લીધી. यानी कि राइटर ने बचपन से ही ऐसा देखा है कि जैसे ही सांप को देखा नहीं कि सबने मारना चालू कर दिया. तो इसी कारणवश जब हेमलसा प्रकल्प की शुरुआत करनी चालू हुई, तभी से राइटर ने सांप कैसा है, जहरीला है कि नहीं है, उस बात की जानकारी, माहिती लेने की शुरुआत कर दी कि एक्चुअली सांप को कैसे पहचाना जाए. સાપ પકડવાનો અને એની જાતિ, પેટા જાતિ નક્કી કરવાનો કસબ હું શીખ્યો. કસબ યાની કે સ્કિલ, કૌશલ્ય. એનું કારણ હતું કે જંગલમાં રહેવું ને સાપને નકારવો એ વાત પણ મને ગળે ઉતરતી ન હતી. यानी कि हमें जंगल में रहना है तो सांप तो हमारे आगे पीछे, यानी कि हमारे या फिर हमारे घरों के आगे पीछे तो रहने ही वाले हैं. दैट इन शॉर्ट कि हम सांप को नकार नहीं सकते या फिर मार भी नहीं सकते. तो उसके बीच का एक रास्ता निकाला. ये जहरीला है कि नहीं उसको जानने की સ્કિલ રાઇટરને પ્રાપ્ત કરી લી. પણ સાપ દેખાય એટલે માણસો એને મારવા મચી પડે છે. એટલે પછી અમે પ્રકલ્પ પર અમારું પોતાનું નાનકડું સર્પોદ્યાન જ શરૂ કર્યું. सर्पोद्यान यानी कि सर्प प्लस उद्यान. सांपों का बगीचा नहीं, लेकिन सांप जहाँ कंफर्टेबली रह सकते हैं ऐसी जगह. आसपास घरनी आसपास अधराते के मधराते, અધરાત્રે યાની કે અડધી રાત્રે, મધરાત્રે યાની કે મિડનાઇટ નીકળેલા સાપ પકડવાના અને એમની દેખભાળ કરવાની અમે શરૂ કર્યું. ભાત ભાતના યાની કે ડિફરન્ટ ટાઈપ કે નાગ, પટ્ટાવાળા સાપ વગેરે અમારા સર્પોદ્યાનમાં હતા. સાપને મારવાનો નહીં એવો नियम જ અમે हेमलक्षाમાં शुरू करो. यानी कि किसी भी प्रकार का आप सांप देखो तो उसको किसी भी तरह से मारना तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा एक रूल्स बनाया. કાર્યકર્તાઓને, શાળાના બાળકોને સાપ પકડતા શીખવ્યું. એને લીધે સાપની હત્યાનું પ્રમાણ ઘટ્યું. બાબાએ શીખવેલા સાહસના બળે અને મને તેમજ વિલાસને થયેલા સર્પ પ્રેમના જોરે અમે સાપની ભરપૂર ભાળ મેળવી. સાપ ઓળખવા સુધી અને એને પકડવા સુધી અમે પહોંચી શક્યા. तो बाबाए शिखवेला यानी कि उनके पिताजी ने जो भी सिखाया है, जितना भी साहस सिखाया है, सिर्फ उसी के बलबूते पर वो उनकी सिस्टर विलास, ये दोनों सांपों को पकड़ने का स्किल, उनको पहचानने का स्किल और उनको किस तरह से रखा जाए वो सारी कौशलता
પ્રાપ્ત હોય. ब्रांडेड क्रेट ये हमारा सर्पोद्यान मोभानो सांप. तो यहाँ पर एक मोभानो सांप यानी कि जो इम्पोर्टेंट सांप है जिसे शायद प्राउड कर सकते हैं उसका नाम है ब्रांडेड क्रेट. એટલી જ એમની કથાઓ અમારા પ્રાણી પ્રેમ સાથે સર્પ પ્રેમ જોડાયેલો હોવાને કારણે અમારું પ્રાણી સંગ્રહાલય વધુ ખીલ્યું. પણ હું પ્રાણી સંગ્રહાલય કહેતો નથી, પ્રાણીઓનું ગોકુળ એમ કહું છું. આ ગોકુળમાં 60-65 યાની કે 60 to 65 પ્રાણીઓ સુધી શાંતિથી સહવાસ કરતા રહ્યા છે. વાંદરા, કૂતરા, ચિત્તા, નોળિયો જેવા આમ એકબીજાના દુશ્મન હોય તેવા પ્રાણીઓ પણ અહીં તો એકબીજાના મિત્રોની જેમ રહે છે. આ બધાનો એક પરિવાર જ બન્યો છે. સેલી વોકર નામના અમેરિકન મહિલા અહીં આવ્યા હતા. એમણે અમારા ગોકુળને આમ્ટેઝ એનિમલ આર્ક એવું નામ આપ્યું. બાઇબલમાં એની વાર્તા છે કે કોઈ એક જ જમાનામાં નોહાઝ આર્ક નામના એક વહાણ પર બધા પશુ પંખી ખુશીથી ભેગા રહેતા હતા. અહીંનું વાતાવરણ એ મહિલાને એવું જ લાગ્યું એટલે એણે આ નામ આપી દીધું. तो राइटर यहाँ पर बता रहे हैं कि ब्रांडेड क्रेट नाम का एक सांप है, वो सर्प से मोभा का यानी कि उनसे प्राउड लिया जा सके ऐसा वो सांप था. राइटर बता रहे हैं कि उन लोगों को प्राणी प्रेम तो था ही यानी कि एनिमल्स लवर वो लोग थे ही, लेकिन साथ साथ में सर्प प्रेम यानी कि सांपों के प्रति भी उन लोगों के अंदर जितनी भी करुणा दया थी उस वजह से उनका जो प्राणी संग्रहालय है वो और खिल गया. एक्चुअली राइटर तो उस प्राणी संग्रहालय को संग्रहालय कहते ही नहीं, लेकिन उन्होंने अब नाम दिया है प्राणियों गोकुड़, क्योंकि इसके अंदर ऐसे ऐसे एनिमल्स रहते हैं जो एक्चुअली एक दूसरे के बिल्कुल दुश्मन होते हैं, वो भी प्राणियों गोकुड़ के अंदर उनके प्रकल्प के अंदर बिल्कुल मित्रता से रहते हैं और सबकी यही भावना से ये एक परिवार जैसा बन गया. प्राणियों गोकुड़ प्रकल्प के अंदर सेली वॉकर नाम के एक अमेरिकन विजिटर आए थे. उन्होंने उसका नाम रख दिया आम्टेज एनिमल पार्क, क्योंकि बाइबल के स्टोरी के अकॉर्डिंग ये एक ज़माने में नोहाज़ आर्क नाम के एक जहाज़ पर ऐसे ही सारे एनिमल्स और बर्ड्स सब मिलजुल कर रहते थे. और प्राणियों गोकुड़ प्रकल्प में भी बिल्कुल वैसा ही एटमॉस्फेयर है, तो उस लेडी ने उसका नाम आम्टेज एनिमल आर्क रख दिया. नाउ वन शॉर्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग टू लेसन. तो ये लेसन कौन सी बुक में से और कहाँ से लिया गया है? तो प्रकाशनी पगदंडी में थी.